You might have heard about Rishabhdev. Anybody has heard about him? Rishabhdev के बारे में सुना है आपने कभी? So we're going to learn about Rishabhdev. Hare Krishna. Anybody from Jain Sampradaya would know Rishabhdev, of course, right? So here is the wonderful teaching of Rishabhdev from Srimad Bhagavatam. So we're going to learn about that from Srimad Bhagavatam, 5th canto, 5th chapter. Before we do that, we'll recite Mangalacharan prayer, invocation prayer. The prayers are on the screen. We all will recite together. Om Ajnanatimiraandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kalamayam Dadani Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamanam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagradatam Sadhana Raghunathanvitam Tam Sajivam Savaitam Savadutam Vaijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Prana Sahaganamandita Shri Krishna He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Namastute Tapta Kanchana Gaurangye Radhe Vrindavaneshwari Rishabhdevi Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayavascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Prabhu. So before we recite Srimad Bhagavatam, we recite Om Namo Bhagavate Vasudevaya 3 times. So you can follow me. All of us will sit straight, neck in the line with the back. You can keep your eyes closed if you can remember the mantra, and you can follow me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudire Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatim Uttama Shloke Bhaktiradhavati Vaishnavi
Rudraj Srimad Bhagavatam ki. So today we are going to learn from the fifth canto of Srimad Bhagavatam. It's Srimad Bhagavatam here, and it has teachings of all the wonderful devotees of Lord. भगवान और भक्त भगवान के भक्तों की कथाएं हैं. So Lord has many incarnations. Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Yada Yada Hi Glanirvavati Abhyuthanam Adharmasya Tadatmanam Paripranaya Vinashaya Cha Vishwatam Dharma Sansatnataya Sambhavani. So every yuga cycle, Lord appears in variety of forms. Sometimes he comes himself as Lord Krishna. Sometimes he comes as his incarnations. What are the different incarnations of Lord? There are innumerable incarnations, but some of the prominent incarnations we call Dashavatara. Like Matsya Avatar, which is incarnation in the form of fish. Then Kurma Avatar, incarnation in the form of a turtle. Then Vara Avatar, incarnation in the form of a boar. Then Narsimha Avatar, incarnation in the form of a half man and half lion. Then in the form of a Kshatriya, Brahmana in the form of Kshatriya, Parshuram. Then Lord came as a Ramachandra. Then Lord came himself as Krishna and Balram. Then Lord came as Buddha. Vamana Avatar also left in between. And then there is a Buddha Avatar. And then the last one will come as the Kalki Avatar in the future. So there are innumerable incarnations. So there is one incarnation of Lord, his name is Rishabhdev. So Rishabhdev, in the fifth canto of Srimad Bhagavatam, gave wonderful teachings to his sons. Rishabhdev had 100 sons and gave wonderful teachings. India is called as Bharatvarsha. In the previous age, it is called Bharatvarsha. Then British named it as India. But actual name of India is Bharatvarsha. And that is after a king whose name was Bharat. And who is that Bharat? That Bharat is Rishabhdev's son. There are three Bharats. One Bharat is, as she said, Shakuntala's son. But that is not the Bharat after which India is named. There is another Bharat, Lord Ramachandra's brother is also Bharat. And there is the third Bharat, which is the son of Rishabhdev. So India is named as Bharat after the son of Rishabhdev. Before India, which was called Bharatvarsha, before that it was called Bharatvarsha, it was called as Ajnab Varsha. Because there was a king, it's called Ajnab. And in his dynasty comes King Nabi. And King Nabi's son was Rishabhdev. And Rishabhdev's son was Bharat. That is how the ancestry starts, right? So, little bit about Lord Rishabhdev. Who is Rishabhdev? So, Rishabhdev is incarnation of Lord Vishnu himself. And he came for a very special purpose. And we're going to learn about that. As I said that there's a dynasty, there are different dynasties. Like Lord Ramachandra, kaun se kul mein aaye? Surya Vansh, Raghu Vansh. Raghu Vansh mein aaye, Surya Vansh mein. Bhagwan Krishna kaun se vansh mein aaye? Yadu Vansh mein. वैसे ही ऋषभदेव है, ये एक वंश में आए, उनका नाम है प्रियवर्त वंश, महाराज प्रियवर्त. ये ब्रह्मा जी के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियवर्त. तो ये प्रियवर्त जो थे, उनके कुटुंब में, उनकी योनि में, उनके कुल में आए भगवान ऋषभदेव. So there was a king, his name was Nabi. And King Nabi, he wanted a son. But he wanted a son that was Lord Vishnu himself. He didn't want an ordinary son. So he and his wife Meru Devi, they requested all the Brahmanas of the kingdom to perform a great sacrifice. Now King Nabi was also very pious. So all the Brahmanas
also cooperated with him and every day performed a great yajna, fire sacrifice. Sacrifice is a very important component of human life. You understand sacrifice, yajna? कौन कौन बताएगा यज्ञ क्या है? ये तीन भक्त आगे बैठे हैं, हाँ ये पीछे आ सकते हैं. हरे कृष्ण, you can join us here. So yajna क्या है? What is yajna? Yajna means, what is sacrifice? Sacrifice means giving up voluntarily. That is called sacrifice. So there are different types of sacrifices. One can do the sacrifice of your possessions, yajna. You can give donations, possessions. Second is sacrifice of your time. You can give your time for Krishna. Right? Third is sacrifice of knowledge. You can give knowledge to somebody. Right? So there are various types of sacrifices. But in the Kali Yuga, most of us have no time for anything. Somebody tells you that when you come and chant Krishna's name, we don't have time also for that. And we all are busy, right? We do not have much money to donate also. So what is the best sacrifice recommended in the Kali Yuga? It is called as Sankirtana, chanting the Krishna's name. Hare Krishna, you're busy? So what is the best sacrifice we can do in the Kali Yuga? Chanting the Krishna's name. So in the Kali Yuga, Sankirtan is the best sacrifice because, as I say, people do not have time now. People are busy. Right? So wherever we go, we have to chant Krishna's name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That is the best sacrifice we can ever do. It is called Sankirtan Yajna. That is recommended for Kali Yuga. In the Kali Yuga, as our lifespan is very short. How short is our lifespan? How short is our lifespan? It can be now also. This time also. After 10 minutes, after 30 minutes, after 30 hours, after 30 years. Nobody knows how long, right? So this human life is very short. So the best thing in this life, people are always thinking, okay, I will make money and then chant Krishna's name when I grow old. That time may not come also. Because life is uncertain, unpredictable, very short. Nobody knows what will happen tomorrow morning. So today we have to do is, instead of spending our time on social media, nothing will come. No friends will come when we are about to die. No social media will come. No family will come. When you are dying, who will be there? Only one person will be with you. That is Krishna. Is that right? So he is our true friend. All other friends are so-called friends. What is so-called friends? They are so-called. So-called, quote-unquote friends. Somebody says so-called father, so-called mother, so-called sister, so-called wife, so-called son. Nobody will come when the time comes, real time comes. People will be there as long as you are healthy. As soon as you fall sick and you cannot get out of bed, I guarantee you nobody will be around. देखिएगा कितने लोग आपके आजू बाजू खड़े रहते हैं, है ना? अपने भी खड़े नहीं रहते. Son also, as soon as the father becomes old, what do? Put them in the old age home. Get out now, enough is enough. You can't serve you. माता पिता बूढ़े हो जाते तो क्या करते हैं? वृद्धाश्रम में रख के आते हैं. Yes or no? You have so many friends. If you lose 2 of your legs and see how many of your friends will be around you. 0. Yes or no? Yes. At that time, only true friend will be with you. And who is that true friend? Krishna will be there with you. जब आपके पास कोई नहीं रहेगा तब कौन होगा? तो भगवान आपके बाजू में खड़े रहेंगे.
लेकिन आप भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी भगवान से रिश्ता ही नहीं रखा है ना। जब मृत्युशैया आएगी, when the death will come, everybody will say, I'm sorry, we can't do. The doctors will tell you nothing can be done. Pray. Then who will be there with you? Krishna will say, I'm there with you. But the problem is that we do not have time for Krishna. कितना बड़ा दुख का भाग्य है। One who is always willing to help you, you have no time for that person. और जो आपको कोई मदद करने वाला नहीं है, उसके लिए आप सब टाइम है आपका। कितना दुर्भाग्य है ना? तो किसका हमें साथ देना चाहिए? One who helps you always or one who is temporary, so-called friend? A true friend or so-called friend? Whom should we spend more time with? Who is your true friend? Krishna is your true friend. When nobody will be there, Krishna will be there inside. Krishna as a Paramatma is always there. इसलिए सततम कीर्तयन्तम माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, हमेशा दृढ़ व्रत से भगवान का स्मरण करना है। कैसे करेंगे हम सब? आइए सब लोग करते हैं, हाथ जोड़ के भगवान को हृदय से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्ण। सो ऋषभदेव, उनके पिताजी थे नाभि और माता का नाम है मेरुदेव। They wanted a son and they prayed to Lord Vishnu, and Lord Vishnu appeared. You can see here they're doing a fire sacrifice here, right? All the Brahmanas are doing sacrifice. And here is the Rishabhdev and his wife Meru Devi, and they worship Lord. So Bhagwan Vishnu उनके सामने हाजिर हो गए। Lord of Vishnu appeared. When you call Krishna with your heart, Krishna will come in front of you. So Lord Vishnu appeared in the form of Lord Vishnu himself with the Garuda. And he asked King Nabhi and Meru Devi, why did you call me? So all the Brahmanas who were doing this tapasya, they were a little bit nervous. Because they said, Lord Vishnu, you are looking so wonderful. You are the master of entire universe. You can give us anything, whatever you want. But we have called you for a very insignificant thing. This King Nabhi and Mata Meru Devi wants a son. So that's why we called you. But the challenge is that they do not want an ordinary son. So Maharaj Nabhi said to Lord Vishnu that I want a son like you. Like you means कहते भगवान विष्णु के जैसा ही बच्चा चाहिए, बाकी कोई साधारण बच्चा नहीं चाहिए। So Lord Vishnu said, there is nobody like me on this planet. There is nobody like me. I am by myself. कोई भगवान के जैसा तो कोई नहीं सकता। So Lord Vishnu said that as you want a son like me, I will expand myself and I will appear as a son in your home. So in this way, Lord Vishnu appeared as a son of King Nabhi and Mata Devi. Bharatvarsha, before it was being called Bharatvarsha, after the King Bharat, it was called as Ajnab Varsha. What was the name? Ajnab Varsha. And it was called Ajnab Varsha after a king called as Ajnab. King Ajnab's son was Nabhi. And this King Nabhi's son was Rishabhdev. And King Rishabhdev's son is Bharat, after which India is called Bharat.
So now, after Brahmana's prayer, Lord Vishnu blessed them, and here you can see Lord Vishnu blessing King Nadi and Mata Meri Devi. And he promised that I will come. So here is the shloka from Srimad Bhagavatam. Lord Vishnu saying, since I cannot find anyone equal to me, I shall personally expand myself into planetary oceans and thus advent myself in the womb of Meru Devi, the wife of Maharaj Nabhi, the son of Agni. So भगवान के अनेक एक्सपेंशंस हैं, रूप अवतार, जैसे कि मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार. तो ये जो अलग अलग अवतार है, इसके भी अलग अलग एक्सपेंशन है. कुछ लीला अवतार है, कुछ चक्रावेश अवतार है, जैसे कि विश्वगौनिकाय की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान तो भगवान स्वयं या उनका एक्सपांशन, ऐसे अलग अलग भगवान के रूप है. तो भगवान ने कहा कि आई विल कम एज एक्सपांशन. तो भगवान का एक एक्सपांशन, जैसे आप हम सब लोग की भगवान का अंश है, हम भी भगवान का एक्सपांशन है. हमें क्या कहते हैं? आत्मा. क्या कहते हैं? आत्मा. और परमात्मा, हमारे सबके अंदर परमात्मा है. तो ये परमात्मा जो है, ये भी भगवान का एक्सपांशन है. तो हम सब भी भगवान के अंश हैं और परमात्मा ही भगवान का एक्सपांशन है. जैसे कि यहाँ से सनरेज आ रहे हैं, यू कैन सी द सनरेज, राइट? The sun rays are here, but sun rays are expanding everywhere, all over the universe actually. Right? So there is sun, and then expanding everywhere in the form of its light or the rays. Right? So similarly, Lord also expands in many forms. So he said that I will appear as your son, Rishabhdev. Now this Rishabhdev, who is the son of Maharaj Nabhi, he had a wonderful qualities. He was the best of the best qualities, and that is why his name was Rishabh. What is the meaning of the word Rishabh? He is the best person among all. That is called as Rishabh. He had super excellent attributes, and that is why he was called as Rishabhdev. He had so many wonderful qualities that even Lord Indra, who is the king of heaven, he was also envious of Rishabhdev. So one time Indra Devta, he decided he is going to stop rain, because he thought that everybody is worshipping Rishabhdev, so who will worship me now? Because somebody has good quality and people become envious, jealous. How can he is so much powerful than me? So Indra became very envious. But Rishabhdev, who is Rishabhdev? He is not an ordinary person. He is the expansion of Lord Vishnu himself. So then Rishabhdev, on the strength of his own power, he invited the rain. So even though Indra Devta didn't want the rain was there. So Indra Devta surrendered to Rishabhdev. And then he offered his own daughter, Jayanti, as a wife to Rishabhdev. And then Rishabhdev got married, and he had a wife, his name was Jayanti. Now Rishabhdev and Jayanti, they had 100 sons. The first son, the eldest son, is Bharat, after whom India is called as Bharatvarsh. And then he had another 99 sons. Out of those, some of them became the great rishis or some great devotees, some brahmanas, and some of them became kshatriyas, like that. But Rishabhdev gave teachings to his children. And it is very important for all the first people who are parents or who wants to be parents. It is very important to learn from the life of Rishabhdev how to raise children, how to live a family life. So Rishabhdev's life is an ideal example of a family life. Even though he was
expansion of Lord Vishnu, who was the supreme personality of Godhead himself. He lived the ideal grihastha life. So ऋषभदेव जब छोटे थे तो वो गुरुकुल में गए, फिर उनकी शादी भी हो गई, है ना? तो भगवान थे, उनको गुरु की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन still we accepted the guru because we all follow the example of the leaders in the society. Yada yada acharati shrestha. Whatever the elders will do, young people will follow. So Rishabhdev, he took the guru. Guru is very essential in our life. We all should have a guru. I'm not talking about swimming guru or taekwondo guru or maths guru. We're talking about a spiritual guru. Baaki to material science, they are called teachers. What is the difference between a teacher and a guru? The guru is the one who lives the life of spirituality. Right? So Rishabhdev, he then taught his children about the spirituality. Here you can see in this picture, Rishabhdev is sitting here. This place is called Brahmavarta. This place is around Karnataka somewhere. So at Brahmavarta, all his sons, they are sitting around, and Rishabhdev is giving the teaching to them. And after this, giving this teaching, then Rishabhdev established Maharaj Bharat as a king. And what are the teachings of Rishabhdev? Teachings are very essential. I gave you the backgrounds, but the main purpose of today's our discussion is the teachings of Rishabhdev. So आइए हम उनके थोड़े teachings पढ़ते हैं यहाँ पे. ऋषभदेव पहला ही श्लोक है श्रीमद् भागवतम में. यहाँ पे कहते हैं ऋषभवाच नायं देह देहो देह भाजा मृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विभुजाम्ये तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्वं शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्व अनंतम्. So I'll recite the whole shloka for benefit of all of us. Rishabhavacha nayam deho deha bhajan loke kastan kaman hrate purani tapo divyam putrakayin sattvam shuddhe yasman brahma saukyam tvanantam. So Rishabhdev is telling to his all the children that, my dear boys, of all the living entities who have accepted the material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs. You know hog? Who is a hog? Pig. पिग जानते हैं, उसको हॉग कहते हैं. तो dogs and hogs, animals basically. So sense gratification means working day and night for eating, sleeping, mating and fighting. Ahar nidra bhay maithunancha सामान्यता पशु भी समान है ना. देखिए हम दिन रात क्या करते हैं, खाने के पीछे भागते हैं, फिर सोने के पीछे भागते हैं, फिर कोई पुरुष स्त्री के पीछे, स्त्री पुरुष के पीछे, और फिर एक दूसरे से ईर्ष्या करना, कंपटीशन करना, झगड़ा लड़ाई करना, बस यही काम है ना. आहार निद्रा भय मैथुन सामान्यता पशु भी समान. तो ऋषभदेव कहते हैं यहाँ पे कि जो भी मनुष्य यहाँ पे, कोई भी जीव, मनुष्य नहीं, कोई भी जीव, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य, everybody of us have a body, is that right? And what is the purpose of the body?
Is it the purpose of body just to eat, sleep, produce some children and die? That the animal can also do it. Is it right? So what is the difference between human and animal? मनुष्य और पशु पक्षी में क्या फर्क है? Humans can use computer. That's a good answer. Humans can build big buildings. We can produce a nuclear bomb, and we can do so many things which animals can do. But does that make us a better human being? That is called a sophisticated animal. Is it right? What is a sophisticated animal? One who lives in a better facility. Animalistic life, but in a very sophisticated way. Is it right? Because the purpose is the same. Eating, sleeping, making and so Rishabhdev said that you should not waste your life day and night for working hard and just for money, 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 sweeter than honey. लोग लगे हैं दिन रात किस लिए लगे हैं? बस लग रहा है कि इतना कमाए कि बस खत्म नहीं हो जाए, सबका पैसा मेरे पास से आ जाए, दूसरे के पास नहीं है तो चलेगा. I must have a lot of money. So Rishabhdev said, one should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. The purpose of human life is to sacrifice. Purpose of human life is to do bhakti. धर्मे ही न अधिको विशेषो धर्मे विहीना पशु भी समाना. धर्म यानी क्या? We are not talking about Hindu, Muslim, Christian, Isai. We are not talking about that. It's an artificial dharma. Real dharma is always Satatam Kirtayanto Mam. Always remember Krishna and never forget Krishna. Because everything is given to us by Krishna. Krishna is what? Who is Krishna? Who is Krishna? Krishna कौन है? कौन बताएगा कृष्ण कौन है? जो सबसे सुंदर है उसको कृष्ण कहते हैं, है ना? ऐसा कोई व्यक्ति है जो सबसे सुंदर है? कौन है? वो कृष्ण है. जो सबसे अट्रैक्टिव है उसको कृष्ण कहते हैं. कौन है सबसे अट्रैक्टिव? हजारों लक्ष्मियों को आकर्षित करते हैं, लाखों गोपियां भागती है, पूरी दुनिया जिसके पीछे भागती है, पूरा दुनिया जिसकी भगवद गीता का महिमा गाती है, वो कौन है? जो अपनी छोटी सी उंगली के गोवर्धन को उठा लेते हैं, जो सबको आकर्षित करते हैं, वो है इनका ऐश्वर्य इतना है जो 16,108 रानी भी रख सकते हैं और जो सोने की द्वारका भी बना सकते हैं, वो है कृष्ण. तो ऐसे कृष्ण जो सबको आकर्षित करते हैं, है ना? जो मोहिनी रूप धारण करे तो शिव जी के उनके पीछे भागते हैं. ये है कृष्ण. तो ये कृष्ण इनकी हमें भक्ति करनी है. तो यही जीवन का सार. बाकी दिन रात पैसे कमाएंगे तो कहाँ रह जाएंगे? यही रहेंगे, कहीं नहीं आएंगे. लेकिन भगवान का नाम अगर कमा लिया तो आप में से जब कितने लोग करते हैं? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. हाँ देखिए, भगवान का नाम इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सब काम में आएगा, लेकिन बाकी सब यही रहेगा. तो मनुष्य जीवन का जो अर्थ है वो है धन कमाना. और कौन सा धन? असली धन. दो प्रकार का धन है, असली और नकली. नकली धन क्या है? नकली धन वो लिखते हैं पेपर के ऊपर $100. अरे पेपर है, what $100? Cheating. They keep on printing in the press, dollars and dollars. Actually, they are cheating us. They are indebted with billions of dollars.
and then they push more currency in the. Is that true? That's why the currency values is decreasing nowadays, because they just keep on printing the money, trillions of dollars in debt, and still printing the money. देखिएगा और डॉलर लगेगा और हम भी है कि नकली धन इकट्ठा कर रहे हैं. What is असली धन? नाम धन. हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Lord Rishabhdev is saying to his son, my dear boys, all the living entities who have accepted the material bodies in this world, one who has been awarded this human form, should not work hard day and night. Double shift करते हैं लोग तो. Night shift security guard, morning shift cashier, day and night. For what? For what? Sense gratification. Buy the new computer, buy the new cell phone, a big house, a big car, a big bungalow. This is called as sense gratification, which is available even for dogs and hogs. You know donkey? Everybody knows donkey. In India, they use donkey for. Have you seen swastik, a donkey in India? No, you are born in India. Are you sure? And haven't seen a donkey? There are so many around. Don't worry, you will see. Donkey works very hard for what? What does a donkey works hard for? Does he get a money? Does he get a love? Donkey gets screwed very hard. Donkey in India carries a heavy load on his back and satisfies Malik. And then what does the Malik do? Malik takes him to a ground to grass. अरे ग्रास तो फ्री में है, ऐसे भी मिल जाता था, मेहनत क्यों कर रहे हैं? उसको कहते हैं गधा मजूरी. गधा मजूरी यानी क्या? जो चीज फ्री में है उसके लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं. तो देखिए हमारे सबके जीवन में एक कोटा फिक्स्ड है. What is your quota is fixed for? Happiness. You have a fixed quota of happiness and fixed quota of distress. है ना? हर एक के जीवन में एक कोटे का सुख है और एक कोटे का दुख है. जितना सुख लिखा है उतना सुख ऑटोमेटिक मिलेगा, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं. अगर नहीं लिखा है तो कितनी भी मेहनत करो नहीं मिलने वाला है. उसका मतलब ये नहीं कि घर पे सोते रहे. ऐसे बोले कि चलो सो जाते हैं, ऐसा नहीं, काम पे तो जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत मेहनत करने में कोई पॉइंट. तो ऋषभदेव कहते हैं we should not work hard day and night simply for donkey work, which is even available for dogs and hogs who do not work hard. You know, dog who has a good master, they have a good house, so they don't have to worry about the bills. And मालिक सब कुछ ध्यान रखता है उसका. One should be engaged in finance and austerity to attain the divine position of. So human life is for bhakti. A कुत्ता भक्ति कर सकता है. A dog can chant Hare Krishna Mahamantra, yes or no? So if you do not chant Hare Krishna Mahamantra, who are we? Can you say loudly, everybody? Can you say loudly? So if you don't want to be a dog, what do you do tomorrow morning? What do you chant? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare. Why should we chant? Why should we chant this mantra? Rishabhdev समझाते हैं, by such activity one's heart is
Our heart is very dirty. It is filled with, what is the dirt in the heart? Let's do one by one. Dirt in the heart. One. Jealousy. Two. Ego. Three. Anger. Somebody said anger. Who said anger? Yeah. Four. Jealousy. Same. Copy paste. Fear. Huh? Fear. 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 Bhai. Yeah. Fear. Fear. Five. Fear. Fifth. Selfishness. Yes. Lust. Lust. Greed. Greed. Everybody correct. Huh? So there are six enemies, six dirts: lust, anger, greed, madness, enviness, illusion, kam, krodh, mad, moh, matsarya, and ahankar. These are the six things in our heart. So Rishabhdev is saying that if you regularly chant and do devotional service means also reading Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. If you regularly read and hear, all the dirt in our heart will be cleared. As if Chaitanya Mahaprabhu says, Cheto Darpana Marjanam Bhava Mahadhava Shriyakainava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam. तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि हम जब भगवान की भक्ति करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, रोज भगवत गीता और भागवतम पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा मन जो है वो शुद्ध हो जाएगा और कल्याण भी होने वाला है। लेकिन उसके पहले साफ सफाई हो जाएगी। रोज स्नान कौन कौन करता है आप में से? एवरीडे हु टेक्स द बाथ? Record breaking. First time ever. Everybody taking a shower every day. Unbelievable. Are you sure? Wow, wonderful. Congratulations. तो दो प्रकार का शावर रहता है, एक है बाहर का शावर शरीर का, और दूसरा है मन को धोना. हाउ डू यू टेक द शावर ऑफ द माइंड? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. तो आप जब मन को रोज साफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ऋषभदेव कहते हैं, by such activities one's heart is purified, and when one attains this position, which means when heart is clean, then he attains eternal blissful life, which is transcendental to real happiness. तो जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, तो जब हमारा शरीर को हम त्याग कर देंगे ना, तो हमें भौतिक शरीर वापस नहीं मिलेगा. Then you will get the eternal happiness. That is the purpose of human form of life. Srila Prabhupada ji explains here in this purport. Who can read me loudly? Maybe our friend Swastik can read loudly. Can you see that, Swastik? Yeah. Okay, can you read it? A human being should try to live in a different way and should not try to imitate dogs and hogs. What does that mean, Prabhuji? Keval Prabhu? We should do like just read this sentence. What does he say? Prabhupada ji say? We should live a different way and should not try to copy dogs and hogs. Means should not spend all our time in eating, sleeping, fighting, running around boys or girls, nowadays. दिन रात लड़का लड़की लड़की लड़का चलते रहता है. ये गड़बड़ नहीं करना है. कलयुग है. कलयुग है तो करना है. कलयुग में होता है. करना है. तो क्या होने वाला है? तो आपको भी वापस कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा. अगर आप कुत्ते बिल्ली के जैसा जीवन जिएंगे तो अगला जन्म वही मिलेगा. What you become, what you practice. You understand this? If you live like a human, you become human. If you live like a dog, you become a. आपकी जो इच्छा है भगवान पूरी करेंगे. ठीक है, करो. The alternative is
mentioned here. Human life is meant for austerity and मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? तपस्या करनी है। जैसे एकादशी आती है, आप में से एकादशी कौन कौन करता है? सब लोग करते हैं, बहुत बढ़िया। कोई भी नहीं कर रहा। एकादशी क्यों करनी चाहिए? एकादशी के दिन हम हमारी इंद्रियों पे थोड़ा संयम रख सकते हैं। आज हम अन्न नहीं खाएंगे, आज हम सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे। एक दिन, 15 दिन में एक दिन, महीने में। इसलिए करनी है तपस्या क्योंकि कुत्ते को नहीं मालूम आज एकादशी है, बाप को मालूम है, लेकिन ह्यूमन को। तो फिर अगर हमें मनुष्य बनना है तो क्या करना पड़ेगा? एकादशी करना है ना? यस और नो? ऑल ऑफ यू एग्री? ऑस्टेरिटी, तपस्या। ऑस्टेरिटी यानी क्या? तो सुबह जल्दी उठना, भगवान के नाम का स्मरण करना, योगा प्राणायाम करना, भगवद गीता पढ़ना। डॉग टाइमर लगा के सुबह जल्दी उठ सकता है? डॉग गेट अप एट 4 o'clock? यस और नो? यस, कुत्ता उठ सकता है सुबह 4 बजे टाइमर लगा के? उठ सकता है? सॉरी सॉरी तो हमें ऑस्टेरिटी रखनी है यानी क्या? तो तपस्या। ऑस्टेरिटी यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑस्टेरिटी। यानी क्या? तो एक मन की ऑस्टेरिटी, यानी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी के बुरे विचार नहीं करने। फिर ऑस्टेरिटी ऑफ टंग। व्हाट इज ऑस्टेरिटी ऑफ टंग? किसी के बारे में बुरा, should not talk negative about anybody. Is that right? And then austerity of body. Austerity of body is voluntarily taking inconveniences, coming regularly to the temple, coming on time to the temple, then serving the temple. All these are austerities. And finance. Finance means तपस्या, और अलग अलग प्रकार की तपस्या है। तो मनुष्य जन्म किस लिए बना है? यज्ञ, दान और तपस्या के लिए। यज्ञ यानी भगवान के नाम का जप करना, दान करना यानी किसी को मदद करना, और तपस्या यानी कि शरीर को तपस्या देना, थोड़ी जल्दी उठना, जल्दी सोना। Who will read this? Prabhuji, can you read? By tapasya, one can get out of the material clutches. Clutches. When one is situated in Krishna consciousness, devotional service is happiness and is guaranteed eternal. So Srila Prabhupada is explaining here that when we are doing tapasya, we are going to get out of the repeated cycle of birth and death. मनुष्य जन्म से, जन्म मृत्यु के चक्र से अगर बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी, है ना? ऐसे बैठे बैठे तो भगवान घर पे आने वाले, आप अगर बैठे रहे कुछ नहीं करेंगे तो भगवान आएंगे? बैठे बैठे तो कोई घर पे आके खाना भी नहीं देते, भगवान कहाँ से आएंगे? सबको जॉब करने को जाना पड़ता है। जंगल में शेर है वो तो राजा रहता है ना? किंग, लायन इज द किंग ऑफ, but does the shikar or does the animal come and say okay eat me? He has to go and hunt the sheep, है ना? इसलिए वैसे ही हम भी कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, हमें मेहनत तो तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या किए बिना भगवान मिलने वाले। मनुष्य जीवन का सार्थक क्या है? What is the ultimate perfection of human life? भगवान की प्राप्ति करना है। तो और एक शिक्षा है, उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो ऋषभदेव कहते हैं, those who are interested in reviving Krishna consciousness and increasing their love for Godhead do not like to do anything that is not related to Krishna. तो अगर आपको भगवान के पास जाना है तो आपकी जो एक्टिविटीज है वो भी उसको सुटेबल होनी चाहिए। They are not interested in mingling with the people who are busy maintaining their bodies, eating, sleeping, mating and defending. They are not attached to their homes, although they may be householders.
तो यहाँ पे ऋषभदेव हमें कह रहे हैं कि अगर हमें भगवान की तरफ जाना है तो हमारा संग बहुत इंपॉर्टेंट है। संग यानी हमारे आजू बाजू के लोग। अगर हमारे आजू बाजू के लोग भगवान में इंटरेस्टेड है तो हमारी भी भगवान के लिए इच्छा बढ़ेगी, है ना? यस और नो? इफ द पीपल अराउंड यू आर मटेरियल कॉन्शियस then you will also feel more material conscious. और आपके दोस्त लोग रोज पार्टी करते हैं, रोज कुछ न कुछ मूवी देखने को जाते हैं या फिर कुछ वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो आपका भी मन वैसे ही होने वाला। यस और नो? जैसा संग वैसा, आप अगर भक्तों के साथ रहेंगे तो कौन मिलेगा आपको? भगवान मिलेंगे। यस और नो? भक्तों के साथ रहेंगे तो भगवान मिलेंगे, और अभक्तों के साथ रहेंगे तो क्या मिलेगा? दुख ही दुख मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपकी चॉइस है आपको कहाँ रहना है। आपके आजू बाजू बर्ड ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। यस और नो? अगर कोई व्यक्ति को देखना है कि ये व्यक्ति कितने पानी में है तो क्या करना है? उसके आजू बाजू के 4 लोगों को ढूंढ के निकालना है और देखिए वो 4 लोग कौन है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति कैसा है। यस और नो? तो आपको अपना संग बहुत संभल के रखना है। यू हैव टू चूज योर कंपनी वेरी केयरफुली। इज इट राइट? कंपनी कैन मेक यू और ब्रेक यू, है ना? तो साधु संग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साधु संग कहाँ मिलेगा थंडरबे में आपको? सिल्वर सिटी में, डॉलर स्टोर में, इंटरसिटी कॉम्प्लेक्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहाँ मिलेगा साधु संग? मंदिर में ही मिलेगा। तो मंदिर में आना जरूरी है कल। यस और नो? है ना? और मंदिर में आके क्या करना है? और बाकी कुछ बातें नहीं करनी है। मंदिर में आके भी हमें भगवान के बारे में बातें करनी है। मंदिर ये कोई सोशलाइजेशन का जगह? इज इट वीकली गेट टुगेदर? इट्स अ गेट टुगेदर टू कम एंड मीट डिवोटी। इट इज अ वीकली गैदरिंग टू कम एंड मीट कृष्णा, है ना? क्योंकि हम सब लोग बिजी है रोज, तो हम कुछ रोज तो मंदिर नहीं आ सकते। चलो हफ्ते में हमने सब ठान दिया है कि हम मंदिर आएंगे और हफ्ते में एक दिन तो जरूर से आएंगे। तो when we come to the temple, what should be our objective? We should gather as much association of Krishna as possible. Yes or no? क्योंकि भक्ति भक्त भगवान से हमारा कुछ संपर्क नहीं आ रहा है, तो हम जब मंदिर आए तो हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? हम हो सके उतने भगवान को हमारे हृदय में घुसा लेते हैं। फिर हम जब अगले हफ्ते आएंगे बूस्टर लेके, तो फिर अगले हफ्ते तक चलना चाहिए, है ना? एक हफ्ते का डोज चलना चाहिए, है ना? तो हो सके उतना कीर्तन में भाग लें और उतना भगवद गीता हम जब हम श्लोक करते हैं तो उसमें भी कृष्ण आंसर कर सकते हैं आप, और प्रसाद में भी आनंद लें, कीर्तन में भी आनंद लें, तो आपको पूरा हफ्ता भर एक इम्यूनिटी मिल जाएगी। फिर आप अगले हफ्ते वापस आएंगे, बीच में भी आ सकते हैं। ठीक है? तो ये ऋषभदेव की बहुत सुंदर कथा है। अभी हमारे पास समय बहुत कम है तो हम यहाँ पे विश्राम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न? नहीं? हमारे श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक में कहते हैं हाउस होल्डर शुड लीड सच अ लाइफ दैट ही गेट्स फुल अपॉर्चुनिटी टू हियर एंड शाइन। वी शुड वर्शिप द डीटी एट होम, ऑब्जर्व द फेस्टिवल्स, इनवाइट फ्रेंड्स एंड गिव देम प्रसादम। A householder should earn money for this purpose and not for, यानी क्या? हाउस होल्डर यानी जो गृहस्थ है, जो जिसके पास वाइफ है, बच्चे हैं, घर है, कुटुंब है, जो पैसे कमा रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? तो ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ के जंगल में चला जाना है, ऐसा नहीं करना। हमें हमारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, लेकिन उसके साथ साथ घर पे एक सुंदर मंदिर हो, फिर मंदिर में रोज सुबह और शाम आरती हो जाए, घी का लैंप लगे, भगवान को भोग लगे, और फिर घर में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाएं, और क्या करें? प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करें।
क्या लिखा है प्रभुपाद जी? He should distribute the प्रसादम। घर पे लोगों को बुलाना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने बीच में भी बताया था कि हफ्ते में एक बार तो आपके घर पे भक्ति का प्रोग्राम होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? भक्ति वृक्ष। और जितने भी गृहस्थ है वो बैचलर्स को बुला सकते हैं, ब्रह्मचारी को बुला सकते हैं। तो गृहस्थ का ये धर्म है, इसको क्या कहते हैं? गृहस्थ धर्म, है ना। तो जो गृहस्थ है उसने क्या करना है? तो 2-4 लोगों को घर पे बुलाना है हफ्ते में, फिर कहते हैं चलिए भगवत गीता साथ में पढ़ते हैं, फिर थोड़ा प्रसाद करना है, आरती करना है, और ऐसे सात्विक जीवन आप जी सकते हैं। पैसे लेके मूवी थिएटर जाना ये सब ठीक है, वंस इन अ वाइल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में करने की जरूरत करनी है, नहीं तो फंसते जाएंगे इसमें से बाहर निकलने का रास्ता भक्ति एक ही मार्ग है। ठीक है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की किसी का कोई प्रश्न? So what is the take home message? चलिए एक चलिए केवल कहो, तो केवल take home message क्या है? So we should not run after material things and try to engage more in bhakti of Krishna. Very nice. Hare Krishna. Next door, Prabhu. Humans are for some. We have some purpose to live. We should not act as dogs and hogs. Very nice, wonderful. Big round of applause to Prabhuji. We are better than dogs and hogs, right? So how can we not be dog and hog? In the morning, afternoon, and evening, right? How do you chant? How do you chant? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, तो जिस दिन हमने चैंटिंग नहीं किया, क्या समझना है? आज का दिन कुत्ते का दिन हो गया है या गधे का दिन हो गया। आज हम मनुष्य नहीं रहे। ठीक है, आइए तो हम आरती करते हैं। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद। आइए सब लोग आगे आ जाइएगा, हम आरती करते हैं।